हॉर्मोन्स जो कि बायोमोलिक्यूल है एंड वी हैव टू रीड ओनली इट्स elementary idea. We are not going to read the detail or structures about it. So hormone जो है, they are the, what we can say, these are the chemicals or intercellular messengers. Chemicals or intercellular messenger, definition में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, they are chemicals or intercellular messengers produced by the endocrine glands. We are having 12 endocrine glands, so we are not going to read all the names and their secretions. Just see the hormones are classified. इनकी जो classification है, classification hormones having a 3 classes. Hormone can be classified into 3 classes. The first one is steroids, and the second one is polypeptide. As we know that 100 amino acids combined or joined together through peptide bond, then we are getting a protein. But here it says polypeptide, means we are not having the protein, but polypeptide, maybe there are 20 or 40 or 60 amino acids joined together by the polypeptide bond. And then the third one we are having, that is the amino acid derivative. Amino acid derivative. And the steroid में हम लोग जो एग्जाम्पल देंगे, दैट इज द एडर्नल कॉर्टेक्स, जो कि कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज ग्लूकोकोर्टिकोइड. And we are having the mineral corticoid. Mineral corticoids. Excuse me. जो glucocorticoid है, it balances the carbohydrate synthesis और glucose synthesis, carbohydrate और glucose metabolism. सो जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है उन्हें रेगुलेट करता है. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को रेगुलेट करता है. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस रेगुलेशन. जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है ये क्या करता है, दैट रेगुलेट the release of salt and urine, or we can say water, by the kidneys. और अगर they are not properly secreted, then the kidneys are not working properly. The person can have a stress, they can have a blood pressure. Then polypeptide. अगर polypeptide की बात करें तो we are having here the insulin. We are having insulin here. Insulin and glucagon. These insulin जो है वो ब्लड शुगर को जो है लो करता है, जबकि ग्लूकागोन जो है वो ब्लड शुगर को राइज करता है. सो यहाँ पे दे बोथ रेगुलेट the blood sugar. Regulate the blood sugar. Then the third one is amino acid derivative. यहाँ पे जो thyroxine hormone है, which is released by the thyroid gland. Thyroxine released by thyroid
gland. And this अगर ये जो हार्मोन है ये बॉडी में कम रिलीज हो, देन हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जो लेस रिलीज है, it will create a condition that is hypothyroidism, which will lead a disease, a enlargement of thyroid gland, and which is known as goiter, and which can be balanced by adding the sodium iodide added in the NaCl, जो हमारा टेबल सॉल्ट है उसमें सोडियम आयोडाइड को ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट दी जो गॉइटर डिसीज है, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड है। एंड अगर ज्यादा रिलीज होता है देन वी आर हैविंग द कंडीशन दैट इज नोन एज hyperthyroidism. That means the person is very weak if there is a more than the limits. अगर ये बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है नॉर्मल से तो जो पर्सन है he or she will be very weak and the condition is known as hyperthyroidism. And अगर जो थायरोक्साइन है वो बहुत कम रिलीज होता है बाय थायराइड ग्लैंड एंड then the disease will occur, that is goiter, which is the enlargement of the thyroid gland. And this जो थायरोक्साइन है it is the derivative, किसका डेरिवेटिव है ये? It is the iodinated derivative of tyrosine अमीनो एसिड, इसका ये डेरिवेटिव है। एंड यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड है वो ग्लूकागोन और इंसुलिन है, दे बोथ रेगुलेट द ब्लड शुगर। इंसुलिन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है वो उसे कंट्रोल करता है, और अगर जो है वो ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, हाइपो हो जाता है, देन ग्लूकागोन जो है रिलीज कर तो रेगुलेट करता है। सो बोथ कैन वर्क टुगेदर टू कंट्रोल द ब्लड शुगर। एंड स्टेरॉइड में एड्रेनल कॉर्टेक्स जो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है इट विल रेगुलेट हाउ मच वाटर और सॉल्ट कैन बी थ्रोन और एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। यहाँ पे जो हमारे पास स्टेरॉइड है एक और है दैट इज बाय द गोनैड्स ऑल्सो। गोनैड्स जो है दैट इज दी सेक्स हार्मोन्स को हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो है दैट इज गोनैड्स, इन मेल दैट इज टेस्टिस एंड इन फीमेल दैट इज दी ओवरीज एंड इन मेल दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन which will produce all the male character, facial hair, voice, Adam's apple, and the body constitution. And ovaries, we can यहाँ पे जो ovaries है they release the hormone that is estrogen and progesterone. So these are the basic ideas of the hormone जो कि एक बायोमोलिक्यूल है। And biomolecule, it or we can say chemical है released by the endocrine glands and they are directly poured into the blood, सीधा ही blood में for the action of site, जहाँ पे इसने काम करना है वो अपने भी चला जाएगा। In our body we are having 12 endocrine glands and जो hormones है they are classified into 3 categories: steroids, polypeptide and amino acid derivatives में। Steroid में we are having 2 type of hormones, that is one released by adrenal cortex and second one is the gonads. And polypeptide में इंसुलिन है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है with glucagon, and amino acid में we are having the iodinated thyroxine which is released by the thyroid gland.